Hey, what's up, guys? I hope you are doing well. Today we'll start a new video series which is political process. And today we'll start a new concept of this video series which is political parties and the party system. सबसे पहले आपको बता दें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि क्रिकेट के बाद आता है। हर किसी की जगह पर क्रिकेट के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ की ही बात होती हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या डेफिनेशंस हो सकती हैं, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, पार्टी सिस्टम क्या है और क्या क्या इसके मायने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्रोथ एंड इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ आर क्लोजली रिलेटेड विद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल सिस्टम। Ernest Barker considered the British system as mother of parties and hence mother of all parliamentary system of the world. Political parties are found in the majority of countries and most political system. According to the argument put by Rajni Kothari, the party system of India has evolved from a political center. The institutional manifestation of the center was Indian National Congress, established on 29 December 1885 in Bombay by A.O. Hume. It was Congress which formed the indigenous base for the political system in the country. आइए जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या। आइए देखते हैं कुछ कीवर्ड्स। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी की। तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इन विद कॉमन आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल एम्स एंड ओपिनियंस टू कंटेस्ट इलेक्शंस, एक्वायर एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी फॉर द गुड लाइफ ऑफ कम्युनिटी। तो अगर इसको समझें तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसकी कॉमन आइडियोलॉजीज़ हैं, व्यू हैं, पॉलिटिकल एम्स हैं एंड ओपिनियंस हैं, जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कराती हैं या फिर करती हैं टू एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज करने के लिए, और जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं पब्लिक पॉलिसी को कम्युनिटी की गुड लाइफ के लिए। और वहीं अगर हम दूसरी बात करें पार्टी सिस्टम की, तो पार्टी सिस्टम क्या है? It is a typical structure of parties and competition among them within a political system. इसी में सेकंड पॉइंट आता है द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। अब जैसे हम कॉलिशन की बात करें तो ये भी एक पार्टी सिस्टम ही है। पार्टी सिस्टम क्या है? कंपटीशन अमंग देम, पार्टीज के बीच में जो कंपटीशन है वो ही पार्टी सिस्टम है। एंड एट लास्ट the system of interactions resulting from the inter-party competition. ये कुछ बेसिक कीवर्ड्स थे पार्टी सिस्टम से रिलेटेड। आइए बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। पॉलिटिकल पार्टी अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऑर्गेनाइज्ड टू एक्वायर पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पार्टीज originated in their modern form in Europe and the United States in the 19th century. Political party is a means which the people can speak to the government and a say in the governance of any country. So every political party must have three key components, which are leaders, active members, and at last followers. India has a multi-party system which is unique in the world. In Indian political system, one can find the rightist, centrist, leftist, regional, even local political parties to deal with the political issues. When Congress was in power for a long time, it was observed as the era of one-party dominance by Maurice Jones or the Congress system as viewed by the Rajni Kothari.
There is no single definition of political parties on which scholars can agree. However, a political party is a political organization that seeks to attain and maintain political power within government, usually by participating in the electoral campaign. Today, under democracy, we observe the festival of elections in India after the term of every 5 years at central and state level and also at the local level. But this journey of a stable electoral system and a democracy has a long process of evolution. Indian politics has passed different phases and reached to become a stable democracy. आइए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. Political parties have always played an important role in Congress, but this role has increased in significance in the past decade. Party ideology influences the relationship between members of Congress, relationship with their constituents, legislature, and characteristics the relationship between Congress and the executive. आइए बात करते हैं व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज डू, कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं. सबसे पहले ये करती हैं नॉमिनेट कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं. इन्फॉर्म द पीपल को इन्फॉर्म करती हैं. एंड स्टिमुलेट इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन. गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करती हैं. वॉच डॉग फंक्शन करती हैं. प्रोवाइड अ लेबल करती हैं. एंड लास्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रूटिंग कैंडिडेट्स. तो ये सब करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज. आइए अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. अ पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस बाय पुटिंग अप कैंडिडेट्स. In countries like the USA, the candidates are selected by members and supporters of the party. On the other hand, in countries like India, the candidates are chosen by top party leaders. Every party has different policies and programs. Voters make a choice in accordance with the policies and programs liked by them. Political parties shape public opinion. With the help of pressure groups, the parties launch movements for solving problems faced by the people. Formation of government. Political parties form and run governments, acting as opposition to party in power. Mobilize the public in an organization. आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम. आफ्टर 1990, rise of many regional parties in and played very important role in formed government at the national and state level. Rise of effective opposition parties. Existence of many regional and non-recognized parties. India has been a multi-party system. Large numbers of regional political parties. Personality cult dominates party politics in India. Rise of the proper functioning of federalism. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी इंडियन पार्टी सिस्टम की. आइए अब बात करते हैं डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स की. सबसे पहले बात करते हैं वन पार्टी सिस्टम. सो इन सम कंट्रीज only one party is allowed to control and run the government. Example, China. These are called one party system. And in this system, only one party is allowed to control and run the government. For example, Communist Party in China. It is not considered democratic since a democratic system must allow at least two parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power. The Congress government was famous for its umbrella system, as every religion and region was connected by the party. Many scholars. The political scene in India
was dominated for a long period by the Congress. Rajni Kothari called the Indian party system as one party dominion system or the Congress system. आइए अब बात करते हैं टू पार्टी सिस्टम की. In some countries, power usually changes between two main parties. Such a party system is called two-party system, where in a typical political election, two major parties dominate American politics. The United States of America and the United Kingdom are examples of a two-party system. A two-party system is a party system where two major political parties dominate the political landscape. A two-party system exists in a state where there are either only two very popular political parties or there are two main political parties along with several other minor less influential political parties. So आइए अब बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की. In several parties are compete for power. In this system, if several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system. Thus, in India, we have a multi-party system. After the 1996 general elections, no single party has been able to secure even a simple majority. A multi-party system means the existence of several popular political parties, three or more than three political parties in the political process. India, Switzerland, Japan, Italy, France are the example of multi-party system. The Congress, BJP, CPI, BSP, NCP, BJD, DMK, SP and other political parties have been played important role in Indian politics. In India, the multi-party system has been responsible for the emergence of coalition politics. आइए अब बात करते हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग पार्टीज़ की कि क्या लेफ्ट विंग पार्टी होती हैं और क्या राइट विंग पार्टी होती हैं. Now here the biggest question that what do we understand by the left wing and the right wing parties? The differences is of ideologies and goals. In general, notion is that right wing focuses on development and bringing FDIs, foreign direct investment, aggressively, whereas the focus of left wing is on the roots, focusing on the poor section of the society and minority more. These are the major players when we talk about the government at the center, as India has a quasi-federal structure. The division of power is among the center and the states. Further, we see the decentralization 73rd and 74th amendments forming local governments at the village as well as town level. The NDA and UPA coalition has been the major two candidates in the center governments. आइए अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल प्रोविजन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. The 10th schedule of the Constitution added by the Constitution 52nd Amendment Act 1985 deals with the disqualification of a person for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of the state on ground of defection. According to Article 29A 1 and 2 of the Representation People Act 1951, any association or body of individual of India calling itself a political party need to make an application to the Election Commission for its registration as a political party. Every political party in India has to register with the Election Commission.
The Election Commission registers political parties for the purpose of elections and grant them recognition as national or state parties on the basis of their poll performance. So, ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो लेक्चर का, पॉलिटिकल पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम का. कल हम इसी कंसेप्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, जहाँ पर हम बात करेंगे नेशनल पार्टीज़ की, स्टेट पार्टीज़ और रीजनल पार्टीज़ की, एंड कि कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं इंडिया में और कितनी रीजनल पार्टीज़ हैं इंडिया में. और साथ ही बात करेंगे चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी. अगर आपको पॉलिटिकल कंसेप्ट के बारे में जानना है कि पॉलिटिक्स है क्या, पॉलिटिक्स से क्या समझते हैं, इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है, राइट्स क्या हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं कि इक्वलिटी के बारे में क्या कहा गया है, राइट्स के बारे में क्या कहा गया है. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमारे चैनल यूनिवर्स इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें. इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ stay home, stay safe, stay indoors. Thank you. Have a nice day.